Everyone, so in this video we will study about the hereditary spherocytosis. This is the continuation of hemolytic anemia. Hereditary spherocytosis एक inherited disorder है जिस in which there is a loss of RBC membrane flexibility. RBC membrane flexibility is lost due to mutation in the ankyrin protein present within the cell wall of red blood cells. Severity of hereditary spherocytosis is defined by the mutation in spectrin protein, which is another structural component of RBC cell membrane. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सिवियरिटी ऑफ ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी या फिर सिवियरिटी ऑफ हिमोलिसिस है वो भी कौन डिफाइन करेगा? द अमाउंट ऑफ म्यूटेशन इन द स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. The autosomal dominant inheritance pattern is more common rather than autosomal recessive inheritance pattern. नॉर्मली क्या हो रहा था, जब ब्लड फ्लो फास्ट होता है तो आरबीसी मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करके उस ब्लड फ्लो को सर्वाइव कर जाती है. बट इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन में म्यूटेशन आ चुका है जिसकी वजह से आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होने की वजह से मेम्ब्रेन शेड होती रहेगी, आरबीसी मेम्ब्रेन में डैमेज होगा और सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा. एंड जो मोस्ट आइडियल शेप है लेस सरफेस एरिया में वो स्फेयर होता है. तो जो आरबीसीज है उनका शेप स्फेरिकल हो जाएगा एंड दीज आरबीसीज नाउ आर नोन एज स्फेरोसाइट्स. जो स्फेरोसाइट्स होते हैं दीज आर स्मॉलर देन आरबीसी एंड नो सेंट्रल पैलर इज सीन. These spherocytes are destroyed in the spleen. Therefore, the treatment for hereditary spherocytosis is splenectomy. Differential diagnosis मतलब और कुछ डिजीज़ हैं जहाँ पे हमें स्पेरिकल आरबीसीज देखने को मिल सकते हैं. तो वो है पेरोक्सोसोमल नॉक्स्ट्रल हीमोग्लोबिनूरिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी एनीमिया एंड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया. मोस्ट कॉमनली ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर हमें स्फेरोसाइट्स देखने को मिलेंगे और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कोम्स टेस्ट. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हम हीमोलिटिक हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और बिलिरुबिन बढ़ा है तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा. गॉल स्टोन्स के अंदर गॉल स्टोन्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि पिगमेंटेड हो गए एंड माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया भी देखने को मिलेगा. हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस मेजर वी कैन सी मेनली टू क्राइसिस, hemolytic crisis and aplastic crisis. When Epstein-Barr virus will infect the person, there will be hemolytic crisis, and if a person is infected by parvovirus B19, it will lead to aplastic crisis. Parvovirus B19 has high affinity for erythroid progenitor cells, so all the stem cells will be affected, which will lead to pancytopenia or aplastic anemia. In the lab features, mean corpuscular hemoglobin concentration will be increased. क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हो रहा है और साइज डिक्रीज हो रहा है तो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन साइज़ छोटा होने की वजह से हीमोग्लोबिन तो उतना ही है तो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मली तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन अगर पर्सन को एप्लास्टिक क्राइसिस हुआ है तो रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा. स्क्रीनिंग की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहला है ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट, ऑल्सो नोन एज पिंक टेस्ट. जो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है उसमें आरबीसीज की ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इंक्रीज हो जाती है. नॉर्मली आरबीसीज आर आइसोटोनिक टू 0.9% ऑफ NaCl, बट अगर हम उसको 0.5% NaCl में डालेंगे तो हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा और 0.3% NaCl के ऊपर 0.3 NaCl की कॉन्सेंट्रेशन पर हीमोलिसिस कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन जब हीमोलिसिस मोर देन 0.5 NaCl के कंसंट्रेशन पर आएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इज इंक्रीज एंड दिस इज सीन इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस. लेकिन अगर हीमोलिसिस इज नॉट कंप्लीटेड इवन एट 0.3% concentration of NaCl,
then we say that there is a decreased osmotic fragility, and decreased osmotic fragility हमें देखने को मिलती है थैलेसीमिया में. दूसरा है osmotic gradient ectocytomy cytometry. It is more reliable and best for screening in the newborn. Confirmatory test for hereditary spherocytosis is flow cytometry, in which eosin 5 male amide test or EMA is done. Hereditary spherocytosis is an inherited disorder caused by intrinsic defects in the red cell membrane skeleton that render red cell spheroid less deformable and vulnerable to splenic sequestration and destruction. The prevalence of HS is highest in northern Europe, where rates of 1 in 5,000 are reported. An autosomal dominant inheritance pattern is seen in about 75% of cases. The remaining patients have more severe form of the disease that is usually caused by inheritance of two different defects. Pathogenesis. The remarkable deformability and durability of normal red cells are attributable to physicochemical properties of its specialized membrane skeleton, which lies closely opposed to internal surface of plasma membrane. Its chief protein component spectrin consists of two polypeptide chain alpha and beta, which form intertwined helical flexible heterodimers. The head region of spectrin diameter self-associate to form tetramers, while the tail associate with actin oligomers. Each oligomer can bind multiple spectrin tetramers, thus creating a two-dimensional spectrin actin skeleton that is connected to cell membrane by two distinct interactions. The first, involving proteins N-chirin and band 4.2, binds spectrin to transmembrane ion transporter band 3. The second, involving protein 4.1, binds the tail of spectrin to another transmembrane protein, glycophorin A. Paragraph we have discussed about the RBC membrane proteins, जिसमें चीफ प्रोटीन्स है स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, बैंड 3, ग्लाइकोफोरिन ए 4.1 एंड 4.2. अब स्पेक्ट्रिन से हम शुरू करते हैं. तो स्पेक्ट्रिन के दो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, अल्फा और बीटा. स्पेक्ट्रिन के दो एंड्स हैं, हेड एंड और टेल एंड. हेड एंड, एक हेड एंड दूसरा हेड एंड से कंबाइंड होता है स्पेक्ट्रिन के. और टेल एंड की बात करें तो टेल एंड पर प्रेजेंट होगा एक्टिन ओलिगोमर. एक्टिन ओलिगोमर और टेल एंड पर ही प्रेजेंट होगा प्रोटीन 4.1. प्रोटीन 4.1 फर्दर अटैच होता है ग्लाइकोफोरिन ए से. और अब हम अगर हेड एंड की बात करें तो हेड एंड अटैच्ड है एनकायरिन प्रोटीन से, जो कि अटैच है 4.2 प्रोटीन से, और फर्दर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बैंड 3 से अटैच्ड है. नॉर्मली आरबीसी के अंदर ये देखा गया है. Hereditary spherocytosis is caused by diverse mutations that leads to an insufficiency of membrane skeletal components. As a result of these alterations, the lifespan of affected red cells is decreased on average to 10 to 20 days from normal 120 days. The pathogenic mutations most commonly affect N-chirin, band 3, spectrin, or band 4.2. The proteins involved in one of the two tethering interactions, presumably because this complex is particularly important in stabilizing the lipid bilayer. Most mutations cause frame shift or introduce premature stop codons, such that the mutated allele fails to produce any protein. The resulting deficiency of the affected protein reduces the assembly of the skeleton as a whole, destabilizing the overlying plasma membrane. Young HS red cells are normal in shape, but destabilized lipid bilayer shades membrane fragments as red cells age in the circulation. The loss of membrane relative to cytoplasm forces the cells to assume the smallest possible diameter for a given volume, namely a sphere. Compound heterozygosity for two defective alleles understandably results in more severe membrane skeletal deficiencies.
The invariably beneficial effect of splenectomy prove that spleen has a cardinal role in premature demise of spherocytes. The trivials of spherocytic red cells are fairly well defined. In the life of portly inflexible spherocyte, the spleen is a villain. The normal red cells must undergo extreme deformation to leave the cords of Billroth and enter sinusoids. Because of their spheroidal shape and reduced deformability, the hapless spherocytes are trapped in splenic cords where they are easily prey easy prey for macrophages. The splenic environment also somehow exacerbates the tendency of HS red cells to lose membrane along with potassium ions and water. Prolonged splenic exposure, depletion of red cell glucose, and diminished red cell pH all have been suggested to contribute to the abnormalities. After splenectomy, spherocytosis persists but anemia is corrected. Clinical features. Before that, pathophysiology, there is प्राइमरी मेम्ब्रेन स्केलेटल डिफेक्ट, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का लॉस होगा. मेम्ब्रेन लॉस होने की वजह से सरफेस वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाएगा और डिफॉर्मेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. ऐसे आरबीसीज इजीली स्प्लीन के अंदर ट्रैप हो जाएंगे और इरिथ्रोस्टैसिस हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पीएच डिक्रीज हो जाएगा और फैगोसाइटोसिस के साथ साथ एक्स्ट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस हो जाएगा. Clinical features. The diagnosis is based on family history, hematologic findings, and laboratory evidences. In 2/3 of the patient, the red cells are abnormally sensitive to osmotic lysis when incubated in hypotonic salt solution, which causes the influx of water into spherocytes with little margin for expansion. HS red cells also have an increased mean cell hemoglobin concentration due to dehydration caused by loss of potassium and water. The characteristic clinical features are anemia, splenomegaly, and jaundice. The severity varies greatly. In small minority, HS presents at birth with marked jaundice and requires exchange transfusions. In 20 to 30% of patients, the disease is so mild as to be virtually asymptomatic. Here, the decreased red cell survival is readily compensated for by increased erythropoiesis. In most, however, the compensatory changes are outpaced, producing a chronic hemolytic anemia of mild to moderate severity. The generally stable clinical course is sometimes punctuated by aplastic crisis, usually triggered by an acute parvovirus infection. Parvovirus infects and kills red cells. Progenitors effectively causing red cell production to cease until an immune response commences, generally in 1 to 2 weeks. Because of the reduced lifespan of HS red cells, cessation of erythropoiesis for even short time periods leads to sudden worsening of the anemia. Transfusions may be necessary to support patient until the immune response clears the infection. Hemolytic crises are produced by intercurrent events leading to increased splenic destruction of red cells. These are clinically less significant than aplastic crisis. Gallstones found in many patients can also produce symptoms. Splenectomy treats the anemia and its complication, but brings with it an increased risk of sepsis since spleen acts as an important filter for blood-borne bacteria. This is the kind of peripheral smear which we can see if a person is having hereditary spherocytosis. In this peripheral smear, we can appreciate spherocytes which are lacking the central pallor. That's all for the hereditary spherocytosis. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.